Hello class 10, how are you? Hope all are doing quite well and everyone is studying hard even in the confines. Well students, today we are going to start with the part 2 of third chapter from the book The Black Aeroplane. A very amazing, interesting story that tells us how we have to have faith in God and faith in self and always to have unfathomable hope. I would like to start the story. The story starts with the narrator who was going in his plane, in his aeroplane, Dakota. In Dakota aeroplane, he was going from France to England. Okay, students, the narrator was going back to his home from France to England. So this is about narrator's flight to his home. The first paragraph tells us, देखो बेटा पूरी स्टोरी में क्या है, एक नरेटर है, नरेटर एरोप्लेन उड़ा रहा है बिगनिंग से एंड तक. ओके, फ्लाइट में उसको फ्लाइट में उड़ान में अपनी फ्लाइट में क्या क्या स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे वो अपने हार्श एफर्ट्स करता है टू लैंड हिज एरोप्लेन. बस यही दे रखा है. ओके, देयर इज वन मेन कैरेक्टर दैट इज द पायलट. He himself is the narrator. The moon was coming up and he says that stars were shining and the narrator was flying back to his home. So what we find further that he talks to Paris control room. He is talking to Paris control room क्योंकि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है ना. So वो वहाँ पर पेरिस में कंट्रोल रूम में वहाँ पर वुमेन से बात करता है that whether he is going in the right direction or it is all about the compass that directs the plane. So he wanted to know about the direction or about his safe journey. After that he gets the message that how he has to take turn to this direction and then it was quite over. So narrator अब फ्लाइट में है, नरेटर एरोप्लेन उड़ा रहा है, रास्ते में वो क्या सोच रहा है कि कैसे वो घर जाएगा. कहाँ जा रहा है वो अपने घर. कहाँ से कहाँ जा रहा है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज गिवन फ्रांस टू इंग्लैंड. घर जाके वो क्या करेगा. ही विल हैव हिज लंच इन इंग्लैंड. ही विल हैव हिज लंच इन इंग्लैंड. सो ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द fuel that he has. It was the last fuel tank. So after that he thinks, oh, it is a very easy flight. But what happens, like the weather was unpredictable. उसको पता नहीं था weather कैसे खराब भी हो सकता है. एकदम से वो क्या face करता है. Adverse weather. Adverse means very bad, harsh weather condition. Weather मौसम कैसा हो जाता है. खराब हो जाता है. क्या क्या होता है उसमें. 3 points. Adverse weather condition के 3 points आपको याद रखने हैं. What are they? They are, it is given in the paragraph itself. There were huge stormy clouds. Next point, black mountains standing in front across the sky. They were the clouds in fact. And after that it says he could not fly up over them because fuel was very less. So he says next further point that there was no enough fuel. Mean these 3 points are there that you have to remember. Now what happens? अब देखो narrator कहाँ पे है. Sky में plane उड़ा रहा है. Weather कैसा हो गया. Stormy, cloudy. So what happens? Adverse weather condition. अब क्या होता है. जैसे कहते हैं ना when the one door opens another door up, another door, one door closes another door opens, right? एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है. Means there is always a solution to the problem. Okay? Solution lies in your mindset, in your thinking. तो क्या होता है. उसको एक black plane दिखता है. Narrator finds a black aeroplane. उस black aeroplane को वो देखता है and he finds out, oh, it is great, I can see one aeroplane. Uska apna next page, I am on the next page now. Uska apna compass was not working, it was dead, all other instruments were also dead. Usne kya kiya. He chased a black plane. Page number 38 with second paragraph.
रेडियो उसका डेड हो गया, उसने अनदर प्लेन को देखा और उसको चेज किया, फॉलो किया। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड। अब वो बहुत खुश, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे अगर उसका पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट खत्म हो गया तो उसने सोचा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूंगा, उसका पीछा करूंगा। चेज मीन्स फॉलो। उसने उसको फॉलो किया। कम ऑन द पेज नंबर 39, थर्ड पेज ऑफ द चैप्टर। उसके एरोप्लेन में फ्यूल क्या था, लेस, कम था, एंड ही सेज दैट ही स्टिल हैज जस्ट 5 to 10 minutes more to reach with that fuel, and he was feeling very frightened. उसको बहुत डर लग रहा था। But what happened suddenly? He was still flying. एकदम से वो क्लाउड से बाहर आ गया। उसको डायरेक्शन पहले नहीं मिल रही थी, अब क्लाउड से वो बाहर आ गया। And soon he found that he saw 2 straight lines of light and it was a runway. फ्यूल उसका लेस था, फिर भी वो कहाँ पहुंच गया, एयरपोर्ट। वहां पर suddenly he found that he has reached a place where there was a row of lights and that was the airport. एयरपोर्ट पे वो पहुंच गया and he was very happy. When he reached at the airport, he went to that woman in the Paris control room में, जो woman थी उसके पास गया और उसने उससे बात करी कि मेरे को एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी ऊपर स्काई में उड़ने के लिए। तो लेडी ने कहा ब्लैक एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं स्काई में, तो वो क्या था, व्हाट वाज दैट? This is in fact a kind of a story which is based on hallucination, or it is about your imagination that cheats you, that deceives you. जैसे आपको सपोज आपको आधी रात को आपकी नींद खुली, आपको अंधेरे में लगता है कोई फिगर है, कोई इमेज है, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं देख वहां पे इमेज है, वो कहते हैं वहां तो कोई भी नहीं है, और आप कहते हैं मैंने तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले। यही नरेटर के साथ हुआ। नरेटर कहता है ऊपर एक एरोप्लेन था, मैंने देखा है, उसने मुझे डायरेक्शन दी है। वुमेन कहती है नहीं, कोई एरोप्लेन नहीं था। दिस इज इन फैक्ट अ स्टोरी बेस्ड ऑन सम डिवाइन पावर और सुपरनैचुरल, अद्भुत, जिसे कहते हैं ना अद्भुत, अद्भुत प्रक्रिया हुई, कुछ ऐसा सा हुआ जो आम धरती पर नहीं होता, अननेचुरल, अनअर्थली। यही नरेटर के साथ हुआ कि नरेटर ने एरोप्लेन एक ऐसा देखा जिसकी हेल्प से वो नीचे उतर गया। सो इन द एंड दिस इज ओनली गिवन दैट there was no fuel, enough fuel in the tank, but still there was a pilot there in that strange aeroplane that helped him to fly. So this is what he tells us, right students? So this story ends here, which simply conveys us a message that we should never give up. That we should never give up means we should always keep hope, because hope sustains life. Never lose your faith in the Almighty. Right students? I hope you will try to read the story on your own, highlight the word meanings and do the question answers. I will discuss the question answers in the next class. Thank you students.